Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 12th and 13th of October. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about Ministry of New and Renewable Energy. They have recognized three major ports as the green hydrogen hubs under the National Green Hydrogen Mission. These green hydrogen, they are very beneficial students for India's development. We will be discussing it in details. Then we will be talking about India Water and Rivers Forum that was held in New Delhi recently. The next, in order to promote research and development in Ayurveda, we will be discussing about Spark 4.0. Then IISc and IIT Madras, they have joined the GBA for the Water Security and Resilience Project. What is this GBA? We will be discussing here. And also an MOU that has been signed to provide technical support. Right, all these things and many more will be discussed here students, so stay tuned with us till the end. If you are new here, do subscribe to us. We have one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. Ministry of New and Renewable Energy recognized the three major ports as the green hydrogen hubs under the National Green Hydrogen Mission. And this green hydrogen students, first of all, you need to understand that this green hydrogen is crucial as it is considered a clean fuel. On its burning, water is released in the form of vapors as a byproduct, right? Because we see the traditional fuels such as your diesel or petrol, they release carbon monoxide, carbon dioxide on its burning, which is injurious and which is harmful for the environment. But here on the other side, green hydrogen release water in the form of vapor as the byproduct, right? So here three major ports have been recognized by the Ministry of New and Renewable Energy. They will be considered as the green hydrogen hubs where the hydrogen will be stored, right? This will promote the use of green hydrogen. It will promote the utilization as well as export of these green hydrogen in the international market. These three ports, they were selected as the strategic hub for large scale green hydrogen production as well as for the industrial use and export. Here, this mission of this National Green Hydrogen Mission, it will be supporting India's target of achieving net zero emission target by 2070. What are these three ports? That is, these are Deen Dayal Port in Gujarat, Vio Chidambaram Port in Tamil Nadu, and Paradip Port in Odisha. Take a note, these three ports has been recently recognized here. Next is India Water and Rivers Forum 2025 was held in New Delhi recently, and this is why important because it is this India rivers. We know that in today's world, even the Indian government, they are promoting water security. Not just water security, they are utilizing these rivers as a mode of logistics, not just logistic but for tourism also. How? By promoting the cruise tourism, right? So this forum was held, right? This was the inaugural edition, that is the first edition of this event was held in New Delhi. This was to basically catalyze the collective action for water security and advance the corporate water stewardship in India. Here, various policy makers will come together, industry leaders will come together, and civil society will be focusing on coordinated efforts to strengthen the water security in India. Right? Very important focus here will be on the economic, social governance of these water bodies. Also, in this, you will be seeing various organizations such as your United Nations, Global Compact, Water Resilient Coalition, Alliance for Water Stewardship, Water Resource Institute India, all these three together held this forum. Then here, CSR Box and the Godavari Initiative, they jointly organized this India Water Rivers Forum where it was held in New Delhi. So you need to remember these students. Take a note of it. Next is CCRAS, that is your Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, that is under the Ministry of Ayush. They have announced the 4th edition of its flagship initiative, that is Spark. Spark is your studentship program for Ayurveda Research Can 4.0. What is the aim of this Spark? It is an initiative to spark scientific curiosity and foster research skills among the undergraduate Ayurveda students across India. So in order to promote
Ayush related products in order to promote Ayurveda, in order to promote research and development, research and innovation, and the youngsters can be attracted here in this particular sector. Not just this, also here with this we know that at global scale now we are promoting the Ayush related products, hence to have better products in the international market, right? So that we can export them, because in international market the quality is the main concern, right? People want quality, so we need to have good quality of products, effective products in the international market. Hence this Spark 4.0 was launched, and it is to foster scientific curiosity and research skills among the young students. Here a studentship of 50,000 rupees will also be provided, and registration will be starting from 15th of October till 15th of November 2025. Take a note of this, important. If the ministry is asked, it is Ministry of Ayush, and this is Spark 4.0. Here under this 300 Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery students will be considered under from various colleges recognized by the National Commission for Indian System of Medicine, and they will be receiving this 50,000 rupees. It will be given in 2 months of, that is each month 25,000 rupees. Next is IISc and IIT Madras. They have joined GBA for Water Security and Resilience Project. GBA is your Greater Bengaluru Authority. They have announced their collaboration with IISc Bangalore, Karnataka, and IIT Madras, Tamil Nadu, and for World Bank funded Bengaluru Water Security and Resilience Project. So in order to make sure, or in order to promote water security, where in Bengaluru, Karnataka, so that the people, they are not having any problem related to water, this particular Great Bengaluru Authority, right, they have recently joined with IISc and IIT Madras for Water Security and Resilience Project. This will be funded by World Bank. Fund worth will be 3,500 crore rupees, and it is to establish a special purpose vehicle under which this amount will be provided, which will be further utilizing for Bengaluru Smart Infrastructure Project, that will be looking after various projects, right? So say for example, these special purpose vehicle, these are very interesting things, right? And it helps to set up a individual authority or individual company that helps to regulate that particular project. Correct. This project is expected to be modeled on IISc urban flood model, that will be making sure that the water security is prominent in Bengaluru. Next is NEGD, that is your National E-Governance Division. They have signed a memorandum of understanding with Bharat Taxi to provide technical support. I repeat, National E-Governance Division of MEITY. They have signed a memorandum of understanding with Shahakar Taxi Cooperative Limited under the brand name of Bharat Taxi, a pioneering corporate-driven national riding hailing initiative. And this will be the, what is this collaboration? Basically, it is to provide technical support to them, right, for Bharat Taxi's upcoming cooperative-driven citizens' first national raid hailing platform set to launch in December 2025. Right here, as it is, the theme is basically to provide technical support, to help them with their online platforms, to help them with their softwares, to help them with their technical support. This particular MOU has been signed with the National E-Governance Division. Right. Next is Niti Aayog students. They have released a roadmap for job creation in the AI economy. I repeat, BVR Subramaniam, the CEO of Niti Aayog, they have released this roadmap for the jobs creation in the AI to transform India into a global hub for AI talent. So we want to attract global talent from all over the world, right? We want to become a global AI hub where we will be coming up with various use cases, doing research and development, coming up with various models, large language models that will be supporting India's development. Hence, the Niti Aayog, they have released this roadmap for the job creation in AI to transform India into a global hub for AI talent. Also students, it is said that because of AI, jobs will be lost. So this initiative will be very crucial in order to provide better services, better job opportunities for the youth of India that are struggling. Also, it examines how AI is reshaping the tech services industry through the lens of work, worker and workforce. Next is international affairs students. We are talking about the overview of the Union Minister Piyush Goyal's visit to Qatar from 6th to 7th of October. Right. So Piyush Goyal, he's our Union Minister of Commerce and Industry, and he was on a 2-day official visit from 6th to 7th of October to Qatar, and it was to strengthen the relation between these two countries, where the focus will be on enhancing the trade and digital cooperation between India and Qatar. Here you can see, here if we look at some of the key outcomes,
The trade between India and Qatar worth $14 billion in 2025 was held, and here various ways were discussed that how can we enhance this trade further by 2030. Also a free trade agreement here, it is expected to be started soon. The negotiations on it is currently going on. Also here this acknowledged the commitment from Qatar Investment Authority to invest $10 billion in India and express their intent to explore more mutually beneficial investments in areas such as infrastructure, renewable energy, logistics and digital economy projects. Correct? Take a note of this. This is important here. Correct? Also, India and Qatar recently held a joint commission meeting, right? And under which these are the certain outcomes that you can take a note of it. Next is banking and finance students. Global FinTech Fest was recently held, right? It was held from 7th to 9th of October. And this was the held where at Geo World Convention Center. This is important, right? And this was the 6th edition of the Global FinTech Fest that was held here. Here also remember India, this is the part 2. Part 1 was discussed yesterday. So just remember India and Denmark here also signed a agreement where they will be focusing on the theme that is green fintech, right? First thing, let me show you itself. Denmark and India collaboration. Invest in Denmark and Copenhagen Fintech, a leading innovation hub for financial technology in Nordic. A partnership with startup Rise hosted a thematic interaction on green tech fintech, that is promoting green energy in the fintech sector. Then a MasterCard partnership was held here, that is PhonePe. They have announced a partnership with MasterCard to roll out the ecosystem-wide device tokenization on their payment gateway. So MasterCard, they partnered with PhonePe here, and India and Denmark, they collaborated on promoting green energy in the investment in the fintech sector. Then third thing, remember AU Small Finance Bank has also announced the launch of the AU multi-currency forex card. So remember these three things. Then apart from this, Bank of India, they have also launched a solution where they will be focusing on preventing the banking frauds and introduced a biometric based UPI transaction for the small payments. So these are certain things for this that you need to remember. Correct? Take a note of this. Next is Bank of India. They have signed a memorandum of understanding with BSF, that is your Border Security Force. This is to boost the financial benefits under the Rakshak salary package, right? Simple, in order to provide benefit to the BFS personals and the veterans here, to enhance the financial benefits there, this MOU has been signed. Here remember, if we talk about this MOU was signed at the BSF headquarters in New Delhi, and this will be providing benefit up to 1 crore rupees, and air accident of up to 2 crore rupees benefit will be provided, right? And personal accident insurance of up to 1 crore and air accident insurance of up to 2 crore will be provided. Next students, next is CotoPay, right? This is a brand of Cotodel Technologies Private Limited powered by NPCI. They have launched the first business specific e-rupee voucher issuance platform to onboard businesses to manage their expenses by leveraging the existing UPI ecosystem. So CotoPay, they launched their first business focused e-rupee voucher issuance platform, right? These vouchers, they can be restricted to specific categories or merchants, ensuring funds are spent appropriately. And this platform will also remove the requirement for individual KYC process, making the onboard quickly and hassle-free. Next is economy and business. Sachin Tendulkar has launched a sportswear brand, that is 10XU. Here they will be launching cricket shoes and other sportswear. It is expected that their sportswear will be starting from 4 to 5,000 rupees, whereas their cricket shoes will be starting from 10,000 rupees, right? So the brand name is 10XU, launched by Sachin Tendulkar, Karthik Gurumurthy and Karan Arora. And take a note of this, and it is under the company name SRT 10 Athleisure Private Limited. So important is the name of the brand 10XU, launched by which famous cricketer, former cricketer Sachin Tendulkar. Next is appointments and resignation. As you can see him in the picture, he is Sebastian Lecornu. He has been reappointed as the new Prime Minister of France. Take a note of this. He has been, and this is after, remember, earlier he was appointed as the Prime Minister of France on 9th of September, succeeding the Francis Bayrou, who resigned after a filing of confidence vote in the National Assembly. And now he has been reappointed here as the new Prime Minister of France.
Next, Rajiv Juneja, as you can see him in the picture, has been appointed as the president of the PhD CCI, that is your PhD Chamber of Commerce and Industry. This is for the term 25-26. He will be succeeding Hemant Jain, the managing director of the KLJ group of companies. Right? Take a note of it. Next is one more thing. Remember, who is the senior vice president? Anil Gupta. Vice President Sanjay Singhania, thus MD and CEO of EPEC Prefab Technologies Limited. Next is science and tech students. Indian Army initiated the induction of the indigenous Saksham counter UAS grid system. What is this? First of all, UAS. UAS is your unmanned aerial system. And what is this? Saksham, it stands for situational awareness for kinetic, soft and hard kill assessed management. I repeat, take a note of this. What is Saksham? Saksham is your situational awareness for kinetic, soft and hard kill assessed management. So Indian Army has inducted this indigenous Saksham counter unmanned aerial system grid system, right? And here the target deployment timeline here is for 2026, and it is to detect, track and neutralize the unmanned aerial system. Where it will be deployed? It will be deployed in it will be developed in partnership with Bharat Electronics Limited in Ghaziabad, UP. Right, students, take a note of this, and it is expected to be delivered in 2026. Next is important days. World Day Against Death Penalty observed on 10th of October, and this day is observed to raise awareness about the capital punishment and advocate for their abolition worldwide. This is the 23rd edition of this day that was observed, with the theme being the death penalty protects no one, abolish it now. Next is World Egg Day, observed on 10th of October, and this day is observed generally on the second Friday of October, on the second Friday of October month, right? And it is to promote the nutritional benefits of eggs as a rich source of protein and essential nutrients. This year falls on 10th of October. Theme here is, here you can see, mighty egg packed with nutrition, right? First time it was observed in 1996. Next students, International Day of the Girl Child observed on 11th of October, and this day is observed basically to highlight the challenges of the girls that are facing and promote their empowerment and human right. There is a theme for this day: the girl I am, the change I lead. Girls on the front lines of the crisis is the theme here that you need to remember. First time this day was observed in the year 2012. Then next is state news, students. Maharashtra has recently signed a memorandum of understanding with the Spain to set up a convention in Nagpur, and we have discussed this earlier also. There is a Spain company, that is Fira Barcelona International. They will be developing world-class convention, exhibition, cultural and academic center in Nagpur, Maharashtra. Earlier they were establishing this in Madhya Pradesh, and now in Maharashtra also it will be established. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. World Lung Cancer Day, it is observed when? This day is observed on 1st of August globally to raise awareness about the lung cancer disease. Question asked is about the theme. What is the theme for the World Lung Cancer Day? It is Stronger Together, United for Lung Cancer Awareness. Next is every year when is Muslim Women's Right Day observed, and also known as your Muslim Mahila Adhikar Divas. So this day is observed on 1st of August, and it is the 6th anniversary of this day. Next, which FinTech Day is annually observed across the globe on 1st of August to raise awareness about the growing importance of FinTech sector in modernizing financial services and improving access to financial products. This day commemorates the death anniversary of whom? It commemorates the death anniversary of Cosimo de Medici, an Italian banker and politician in 1464. Next is on which date is the World Breastfeeding Week observed annually to raise awareness and promote action in support of breastfeeding. So, World Breastfeeding Week observed from 1st to 7th of August. Theme being prioritize breastfeeding, create sustainable support system. Next, World Wide Web, celebrated annually on 1st of August, commemorates the development of World Wide Web by whom? By Tim Berners-Lee. Next, the Indian Organ Donation Day is annually observed on 3rd of August to commemorate the first successful diseased organ transplant in India. Question asked is, mention the organization which observes the Indian Organ Donation
Day. So mention that organization. Which is that organization? It is your National Organ and Tissue Transplant Organization. And this year it was the 15th edition of this day that was observed. Next, every year when is National Bone and Joint Day observed across India to raise awareness about the importance of strong bones and joints in the people of all ages and to educate them about preventive measures and early detection of various mucoskeletal disorders and conditions. So, National Bone and Joint Day observed on 4th of August. Next, Hiroshima Day, right? It is observed on 6th of August to commemorate the atomic bombing of Hiroshima in Japan by USA. 6th of August marks which anniversary of atomic bombing of Hiroshima? It is the 80th anniversary of the Hiroshima bombing. Next, National Javelin Day is observed across India to commemorate the remarkable achievement of Neeraj Chopra during the Tokyo Olympic Games, where he secured gold medal for India in the javelin throw event. So, every year, when is this National Javelin Day observed? It is observed on 7th of August every year, and this is the 4th edition of the National Javelin Day that was observed. Next, Nagasaki Day. We observed Hiroshima Day. Now it is your Nagasaki Day, observed on 9th of August, and it also marks the 80th anniversary of the bombing here, right? Because after 3 days only, this was bombed. Next, every year, Quit India Movement Day, also known as Agast Kranti Divas, is observed across India on 8th of August to commemorate the anniversary of Quit India Movement launched on this date in which year? It was in 1942, right? Agast Kranti, and this is the 83rd anniversary of this Agast Kranti. Next, every year, when is International Day of the World's Indigenous People, also known as the World Tribal Day, observed across the globe to raise awareness and promote the rights, cultures, and identities of the indigenous communities while highlighting the unique challenges they face globally. So, this day observed on 9th of August. Take a note of it. Next is World Sanskrit Day. World Sanskrit Day. Sanskrit is one of the oldest language in the world, also known as the International Sanskrit Day or Sanskrit Divas, Vishwa Samskrita Dinam, observed annually across the globe on Shravana Purnima, the full moon day of the Hindu month of the Shravana, to promote Sanskrit language. This day it marks the birth anniversary of whom? It marks the birth anniversary of the Panini, the renowned Sanskrit scholar and the grammarian. Then Sanskrit week is also observed from 6th to 12th of August. Right? Next, World Lion Day, annually observed across the globe on 10th of August to raise awareness about the lion, and the scientific name of lion is Panthera leo. This is to promote the efforts to protect the important role in the ecosystem and cultural heritage worldwide of lion. This year it marks which anniversary? It was the 13th anniversary or 13th edition observance of the World Lion Day. Next, every year when is World Biofuel Day observed worldwide to spread awareness about the benefits of using non-biofuels, that are your green fuels, instead of the traditional fossil fuels. So we observe this day on 11th of August, and this is the 3rd edition of this day that was observed. Next, every year when is World Steel Pen Day observed to highlight the cultural and historical importance of steel pen, the national musical instrument of the Trinidad and Tobago, and their role in promoting sustainable development. So theme, when do we observe this? It is on 11th of August. Right, take a note of this. Next, World Elephant Day observed annually across the world on 12th of August to raise awareness about the preservation and protection of elephants, also known as the gentle giants worldwide. What is the theme of the World Elephant Day? It is asked. Theme being bridging the world together to help elephants, and this day is observed on 12th of August. Next is identify the host for the 2025 International Youth Day global event jointly organized by United Nations Human Settlement Program and United Nations Department of Economic and Social Affairs. So identify the host here, host being Nairobi, Kenya, right? And this is also the headquarter for United Nations Environment Program. And this was the 30th anniversary of the World Program for Action of Youth. Correct? So take a note of that also. So international, identify the host for the International Youth Day. It is Nairobi, Kenya.
Next is World Organ Donation Day. It is annually observed across the globe on 13th of August to commemorate the first successful organ transplant in 1954. What is the theme of the World Organ Donation Day observed? So the theme being answering the call here. Next is every year when is International Left-Handers Day observed across the globe to celebrate the uniqueness, advantages and disadvantages of being left-handers who account for approximately 10% of the world's population. It is 13th of August we observe this International Left-Handers Day. Next, every year when is Partition Horror Remembrance Day, that is the National Memorial Day in India, observed to honor the victims and reflect on the pain and suffering caused by 1947 partition of British India. So when is this Partition Horror Remembrance Day observed? It is observed on 14th of August, and this is the 5th annual commemoration of this Partition Horror Remembrance Day in India. Also this day it coincides with the Pakistan's Independence Day. Next, every year when is Humanitarian Day observed globally to honor humanitarian workers, including those killed or injured while helping the most vulnerable. So it is 19th of August we observe this day, and it is the 22nd anniversary of this day. Next, Sadbhavna Divas or Harmony Day observed on 20th of August every year. This day marks the birth anniversary of which former Prime Minister? So it marks the birth anniversary of the Rajiv Gandhi ji, who is the former Prime Minister of our India. Next, every year World Mosquito Day. When do we observe this? On 20th of August, World Mosquito Day. Then World Senior Citizen Day is observed on 21st of August. Theme is being asked for the World Senior Citizens Day. Theme being empowering elderly voices for an inclusive future, right? And this is the theme here that you need to remember. Next, when is International Day of Remembrance of the Slave Trade and its Abolition observed to honor the memory of all the people who suffered under the transatlantic slave trade during the colonial era? So it is, when do we observe this International Day for the remembrance of the slave trade? It is 23rd of August, right? Observed by UNESCO. Next, National Space Day observed on 23rd of August to honor the historic success of ISRO's which mission? It was ISRO's Chandrayaan-3 mission and successful deployment of the Pragyan rover. And our country became the 4th country to put a rover on the south pole of the moon. Next, every year World Water Week, the leading global conference on the water crisis, is observed during the last week of August. When is the World Water Week observed? So it is observed from 24th to 28th of August, World Water Week. Next, every year when is International Day Against Nuclear Test observed across the globe to raise awareness about the efforts of nuclear weapon test explosions and advocating for a nuclear-free weapon world. This day is observed on 29th of August, and it is the 16th observation of this day. Next is National Sports Day, also known as Rashtriya Khel Divas, observed on 29th of August to commemorate the birth anniversary of Dhyan Chand Singh, the legendary Indian sports player. Right, he was also known by the Wizard of Hockey. He is related to which sport? He is related to hockey, and this year it was the 14th edition of the National Sports Day that was observed. Next is our homework section, students. First question is World Food India. Which edition of this was held recently? Second, our country India will become the third largest economy, world's third largest economy by which date or by which year? Right, that is by 2028, and this report was given by which organization? Tell me that. Then third question, tell me recently which state will be setting up India's first Hornbill Conservation Center, and in that state also at which tiger reserve it will be established? Tell me that. Then fourth question, students, tell me recently in India where is the third highest tiger density in India? Right, where is it? Tell me the first also where we see the highest tiger density. Then fifth question is when do we observe Sustainable Agriculture Day? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 12 और 13 अक्टूबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। इन्होंने 3 पोर्ट्स को अभी रिकॉग्नाइज किया एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देन इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम की बात करेंगे जो न्यू दिल्ली में हुआ। देन स्पार्क 4.0 की बात करेंगे जो कि यंग इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, नर्चर करने का काम करेगा इन द आयुर्वेदिक रिसर्चिंग। देन IISc एंड IIT मद्रास, इन्होंने GBA ज्वाइन किया फॉर वाटर सिक्योरिटी। एंड एक MOU डिस्कस करेंगे जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा टू भारत टैक्सी। ये सारी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। काफी बेनिफिशियल सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी नोन फ्रेंड्स के साथ जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, वरना डेली बेसिस पे जो न्यूज देखना चाहते हैं आप उनको भी ये चैनल रिकमेंड करो, जिससे उनको दिखे कि हम डेली बेसिस पे कितना रिफाइंड वे में एंड टू द पॉइंट आपको न्यूज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको इंसाइट मिलती है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 3 मेजर पोर्ट्स को एज द ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखो, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये समझो कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम इस फ्यूल को बर्न करते हैं ना, तो हाइड्रोजन निकलता है, वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये बाय प्रोडक्ट निकलता है। अगर हम फॉसिल फ्यूल, जैसे अगर हम देखें डीजल, पेट्रोल, इनको बर्न करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चीजें निकलती हैं विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करें तो वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये काफी बेनिफिशियल है इंडिया में अगर हम ग्रोथ के टर्म से देखें। इसीलिए यहाँ पे ये 3 मेजर पोर्ट्स को अभी रिकॉग्नाइज किया गया। रीजन बीइंग, इन पोर्ट्स पे हम प्रोडक्शन होती हुई दिखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की। पोर्ट्स पे ही प्रोडक्शन होगी तो ये एक्सपोर्ट अगर हमें ये फ्यूल करना है तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स इसकी बहुत इजी होती हुई दिखेगी, राइट। एंड इसका यूज बढ़ता हुआ हमें दिखेगा इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो 3 पोर्ट्स हैं, दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात में है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, एंड पैरादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है, राइट। एंड ये प्रमोट करता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को, यूटिलाइजेशन को, एक्सपोर्ट को एंड सस्टेनेबल मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को ये प्रमोट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम, अभी 2025 का हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिला। यहाँ पे बेसिकली सस्टेनेबली हम वाटर रिसोर्सेज को यूज कर सके, मेन एम ये रहेगा कि कैसे हम वाटर सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं। एंड यहीं पे आप देखेंगे कि CSR बॉक्स एंड गोदावरी इनिशिएटिव इन्होंने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करा था ये इनॉग्रल एडिशन। इनॉग्रल एडिशन का मतलब ये फर्स्ट एडिशन था आपका इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम का, जो न्यू दिल्ली में देखने को मिला था, राइट। फिर यहीं पे कई सारे पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, सिविल सोसाइटीज ये साथ मिलकर आए एंड कैसे हम वाटर सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर काम किया जाएगा। इवन कुछ टाइम पहले याद हो तो आप देखेंगे कि इंडिया में रिवर क्रूज के ऊपर भी बहुत काम किया जा रहा है। रीजन बीइंग कि वाटर बॉडीज को हम यूज कर सके ताकि एक पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता हुआ दिखेगा। ये भी एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हम कहीं ना कहीं देखेंगे जो हमारी वाटर बॉडीज है वो भी साफ रहेंगी। वाटर बॉडीज साफ रहेंगी तो जो वाटर सिक्योरिटी है हमारी वो बेटर होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट है CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इन्होंने अनाउंस किया 4th एडिशन ऑफ देयर फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्पार्क, राइट, स्पार्क 4.0। ये इनिशिएटिव एम करता है टू स्पार्क साइंटिफिक क्यूरोसिटी एंड फोस्टर रिसर्च स्किल्स अमंग अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदा स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पे जो ये अभी हम बात कर रहे हैं 4th एडिशन की, राइट, ये क्यों करा जा रहा है, जिससे क्या होगा जो यूथ है इनको हम आयुर्वेदा सेक्टर में, आयुष सेक्टर में ला सकें, इनकी जागरूकता बढ़ा सकें, इनको ट्रेन कर सकें, इनको स्किल प्रोवाइड कर सकें। एंड इसी के अंडर हम देखेंगे 50,000 की इंटर्नशिप की यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। 25,000 ईच 2 महीने का ये रहेगा। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है इसके लिए वो स्टार्ट होता हुआ हमें दिखेगा। एंड 300 बैचलर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे जिनको फर्दर ट्रेन करने का काम किया जाएगा।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आईआईएससी एंड आईआईटी मद्रास ने अभी भी रिसेंटली ग्रेट बेंगलुरु अथॉरिटी के साथ वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का बात की। एंड ये जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा अंडर स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी के अंडर यहाँ पे बनाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक इनको यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है। ये जो फंडिंग रहेगी ये आपकी 3500 करोड़ रुपए की फंडिंग रहेगी। एंड इससे होगा क्या, जो बेंगलोर में हमें वाटर इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है, पानी की कमी देखने को मिलती है, वो पूरी होती हुई दिखेगी। वाटर को सस्टेनेबली मैनेज किया जाएगा, राइट, वाटर को ट्रीट किया जाएगा तरीके से। एंड फर्दर वहां पे लोगों को वाटर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड होती हुई दिखेगी। क्योंकि बहुत अर्बनाइजेशन हो गया है पिछले कुछ टाइम से, इसलिए जो ग्राउंड वाटर है वो भी काफी ज्यादा डिप्लीट होता हुआ हमें बेंगलोर में देखने को मिला है। करेक्ट। तो अभी इनके द्वारा ये एक ग्रेट बेंगलोर अथॉरिटी के साथ वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया, जहां पे एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, NEGD नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इन्होंने भी एक एमओयू साइन किया भारत टैक्सी के साथ टू प्रोवाइड इनको टेक्निकल सपोर्ट। भारत टैक्सी बेसिकली ये एक पायनियरिंग कोऑपरेटिव ड्रिवन नेशनल राइड हेलिंग इनिशिएटिव है, जैसे ओला उबेर हो गया। सिमिलरली ये भी एक राइड हेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ये इंडिया का पहला नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रहने वाला है, जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड दिसंबर 2025 तक ये लागू होता हुआ दिखेगा, लॉन्च होता हुआ दिखेगा, राइट। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि ये एक एमओयू साइन किया गया ताकि इनको जो भी टेक्निकल सपोर्ट है कि कैसे सॉफ्टवेयर रन करेंगे, कैसे बुकिंग होगी, कैसे पेमेंट होगा, उसकी सिक्योरिटी, राइट, उन सभी चीजों को हैंडल करने के लिए NEGD नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने इनके साथ ये एमओयू साइन करा। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टूडेंट्स, ये एआई से रिलेटेड है। नीति आयोग के द्वारा भी एक रोड मैप बनाया गया है फॉर जॉब क्रिएशन इन द एआई इकोनॉमी। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे एआई से बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस होते हुए दिखेंगे। जॉब लॉसेस होंगे तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, लोगों के पास रोजगार खत्म होता हुआ दिखेगा, राइट। तो अब लोगों को नई स्किल जैसे एआई में ट्रेन होना पड़ेगा, एआई के सॉफ्टवेयर को अपनाना पड़ेगा, एआई के मॉडल्स को ट्रेन करना आना चाहिए, उनको एआई को अडॉप्ट करना आना चाहिए कि कैसे हम एआई को यूज कर सके, आज अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। एंड जो इंडस्ट्री रेडी स्किल्स हैं उनको हमें समझना होगा। तो इसीलिए एआई को ध्यान में रखते हुए रोड मैप बनाने की बात की गई कि जॉब्स को क्रिएट करा जा सके इन द एआई इकोनॉमी एंड इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। क्योंकि अगर हम देखें, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इवन जेपी मॉर्गन के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिन्होंने उसने बताया कि इंडिया को ट्वाइस एज फास्ट ग्रो होना पड़ेगा। अगर हमें करंट जो जॉब डिमांड है उसको पूरा करना होगा तो हमें ट्वाइस एज फास्ट ग्रो करना पड़ेगा। और ऑलरेडी इंडिया अगर हम देखें वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, राइट। तो एआई की मदद से, एआई की बदौलत जो जॉब लॉस होंगी उसको काउंटर करने के लिए जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करने का यहां पे रोड मैप भी स्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी अभी ऑफिशियल विजिट पे थे कतर की, 6 से 7 अक्टूबर, मतलब 2 दिन की ये विजिट थी। यहां पर उन्होंने इंडिया कतर ज्वाइंट कमीशन मीटिंग में पार्टिसिपेट किया एंड उसके कुछ की आउटकम्स हैं। जैसे यहां पे इंडिया और ट्रेड की बात की गई, इंडिया और कतर में ट्रेड की बात की गई, वर्थ $14 बिलियन इन 24-25 जो था उसको फर्दर एक्सपेंड करने की बात की गई 2030 तक। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर काम करने की बात की गई। यहां पे डिस्कशन हुई कि कैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे दोनों कंट्रीज को बेनिफिट देखने को मिलेगा। फर्दर यहां पे कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने किया कि हम $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। एंड यहां पे कई सारी चीजों के ऊपर जैसे रिन्यूएबल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, डिजिटल इकोनॉमी, इन सब के ऊपर काम करेंगे, इन सेक्टर्स को ग्रो करने का काम करेंगे इंडिया में। मूविंग ऑन, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आते हैं स्टूडेंट्स। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हमने डिस्कस किया था, ये 6वां एडिशन था। कहां पर हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हमें देखने को मिला था, मुंबई में। एंड ये इसका पार्ट 2 है। यहां पे याद रखेंगे इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में कोलैबोरेट हुआ कि हम ग्रीन फिनटेक को प्रमोट कर सके, मतलब ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सके इन द फिनटेक सेक्टर। इंपॉर्टेंट। देन मास्टर कार्ड की पार्टनरशिप देखने को मिली फोन पे के साथ। इन्होंने फोन पे ने मास्टर कार्ड के साथ यहां पे पार्टनर किया है ताकि एक इकोसिस्टम वाइड लॉन्च किया जा सके डिवाइस टोकनाइजेशन का ऑन देयर पेमेंट गेटवे। एंड फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने अनाउंस किया एयू मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड को। तो ये 3 चीजें भी आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट से। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने एमओयू साइन किया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ ताकि रक्षक सैलरी पैकेज के अंदर जो भी यहां पे बीएसएफ पर्सनल्स हैं, वेटरन्स हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके। डायरेक्ट याद रखेंगे यहां पे अगर हम देखें पर्सनल एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस की बात करें तो 1 करोड़ तक की प्रोवाइड कराई गई। एंड एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहां पे 2 करोड़ तक की प्रोवाइड कराई गई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं कोटोपे। कोटोपे ये एक ब्रांड है ऑफ कोटोडेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पावर्ड बाय एनपीसीआई। इन्होंने लॉन्च किया ई रूपी, जो कि है डिजिटल रूपी वाउचर इशुएंस प्लेटफॉर्म। यहां पे आप ई रूपी के वाउचर्स बाय कर सकते हैं, राइट। वाउचर से क्या होगा, आपको केवाईसी नहीं करानी होगी एंड पैसा कहां जा रहा है, किस तरीके से इधर से उधर जा रहा है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, लेकिन उसको प्रॉपर मैनेज किया जा सकेगा ताकि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ना हो सके, राइट। एंड एम्प्लॉइज कैन यूज एग्जिस्टिंग यूपीआई जैसे भीम,
UPI, गूगल पे या बॉब आई पे, ताकि फॉर दिस बाइंग दीज वाउचर्स, राइट। एंड काफी हैसल फ्री यहाँ पे ऑन बोर्ड हमें होता हुआ दिखेगा, हैसल फ्री एक्सपीरियंस इससे देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर स्टूडेंट्स। सचिन तेंदुलकर के द्वारा अपना एक खुद का स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया गया है 10XU। यहाँ पे जो नॉर्मल शूज रहेंगे वो बताया जा रहा है कि 5 से 6 हज़ार की रेंज में रहेंगे। वहीं पे जो क्रिकेट शूज रहेंगे स्पाइक्स जिनको हम कह देते हैं वो 10 हज़ार से शुरू होते हुए दिखेंगे, राइट। इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, फिटनेस को प्रमोट करने के लिए ये ब्रांड लॉन्च किया गया है, नॉट जस्ट इन इंडिया। इसको ग्लोबल स्केल पे ले जाया जाएगा एंड बाकी कंट्रीज में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो 10XU यहाँ पे ये ब्रांड का नाम रहेगा। मूविंग ऑन, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे आते हैं। सेबेस्टियन लेकॉर्नो, इनको रीअपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। फिर राजीव जुनेजा, इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ PhD CCI का। टेक अ नोट ऑफ दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये किनको सक्सीड करेंगे, तो हेमंत जैन को ये सक्सीड करेंगे, राइट। एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अनिल गुप्ता। वाइस प्रेसिडेंट संजय सिंघानिया। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक पर आते हैं स्टूडेंट्स। फिर इंडियन आर्मी ने अभी इंडक्ट करा इंडिजीनियस सक्षम को। ये काउंटर अनमेंड एरियल सिस्टम, ग्रिड सिस्टम रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। अनमेंड एरियल सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। एक्सपेक्टेड है 2026 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। कौन बना रहा है इसको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, गाजियाबाद यूपी में, ठीक है। मार्क करेंगे सक्षम। सक्षम की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। आई रिपीट, फिर से बता रहा हूं, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेस्ट मैनेजमेंट, ये सक्षम रहेगा, जिसको अभी इंडियन आर्मी ने इंडक्ट करा। इंडिजीनियसली इसको बनाया जा रहा है, मेड इन इंडिया के अंडर इसको बनाया जा रहा है। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। डेथ पेनल्टी को खत्म करने के लिए, इसको अबॉलिश करने के लिए वर्ल्ड वाइड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 23वीं बार हमने इसको इस बार ऑब्जर्व किया। इसकी एक थीम याद रखेंगे, द डेथ पेनल्टी प्रोटेक्ट्स नो वन, अबॉलिश इट नाउ, ये यहाँ पे थीम रहेगी इस डे की। पहली बार 2023 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। फिर इसके बाद वर्ल्ड एग डे आ जाते हैं। 10 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया गया 2025 में, वरना जनरली ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर मंथ, जो कि अक्टूबर में इस बार सेकंड फ्राइडे 10 अक्टूबर का था। थीम याद रखेंगे, माइटी एग पैक्ड विद न्यूट्रिशनल बेनिफिट, यहां पे थीम रहेगी। 1996 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। गर्ल चाइल्ड्स के राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स एंड उनको जो अपनी डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। यहीं पे थीम याद रखेंगे, द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ द क्राइसिस, ये यहाँ पे थीम रहेगी जो कि इंपॉर्टेंट है, सो टेक अ नोट ऑफ इट। एंड पहली बार इसको 11 अक्टूबर 2012 में ऑब्जर्व किया गया था। फिर स्टेट न्यूज पर आते हैं स्टूडेंट्स। अगर कुछ दिन पहले याद हो तो आपको मध्य प्रदेश में यहाँ पे एक MOU साइन किया गया था फीरा बार्सिलोना के साथ, जो कि एक स्पेन की कंपनी है, जो कि वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन एग्जीबिशन एंड कल्चरल सेंटर बनाती है। तो सिमिलर एक MOU अभी महाराष्ट्र में भी साइन किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया स्पेन की कंपनी फीरा बार्सिलोना के साथ, ताकि महाराष्ट्र में भी ऐसे इंपॉर्टेंट एंड काफी सुंदर कन्वेंशन सेंटर्स यहाँ पे बनाए जा सके, जहां पे कई सारी और इवेंट्स कराए जाए। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को। फिनटेक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, फिनटेक होता है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ये डे कमेमोरेट करता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ कॉसिमो दे मेडिसी। ये एक इटालियन बैंकर एंड पॉलिटिशियन थे 1464 में, इनकी डेथ एनिवर्सरी को ये डे कमेमोरेट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच डेट वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट एक्शन इन सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो 1 से 7 अगस्त तक हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को टू कमेमोरेट द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ये किन के द्वारा और डिस्कवर किया गया था, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ये ऑब्जर्व किया गया एनुअली ऑन 3 अगस्त टू कमेमोरेट फर्स्ट सक्सेसफुल डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन इंडिया। पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने ऑब्जर्व किया इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे को। तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका 15वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, हर साल नेशनल बोन एंड जॉइंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड जॉइंट्स इन द पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड टू एजुकेट देम अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ वेरियस
मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड कंडीशंस। तो नेशनल बोन एंड जॉइंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 अगस्त को। नेक्स्ट, हिरोशिमा डे। या राइट, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को यूएसए ने बॉम्ब डाल दिया था। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। एटॉमिक बॉम्ब डाला था। इट मार्क्स द 80th एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन 6 अगस्त। एंड फिर 9 अगस्त पे नागासाकी पे बॉम्ब डाला था। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फिर नेशनल जेवलिन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल जेवलिन डे, नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जेवलिन, राइट। एंड नेशनल जेवलिन डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? जब इन्होंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 2020 में। तो उनको ऑनर करने के लिए यह डे स्टैब्लिश किया गया था। एंड 7 अगस्त को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। और इस साल हमने चौथा एडिशन ऑब्जर्व किया था इसका। नेक्स्ट, नागासाकी डे आ गया। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 अगस्त को, राइट। एंड कौन सी एनिवर्सरी थी? 80th एनिवर्सरी ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट डे ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति, 1942 में हुई थी, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन विच डेट, ऑन विच ईयर? तो 1942 में लॉन्च की गई थी, अगस्त क्रांति भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एवरी ईयर व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, जिसको हम वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जानते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट द राइट्स, कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिटीज वाइल हाईलाइटिंग द यूनिक चैलेंजेस दे फेस। तो 9 अगस्त को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। नेक्स्ट, वर्ल्ड संस्कृति डे। वर्ल्ड संस्कृत डे, संस्कृत वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, इसी को हम इंटरनेशनल संस्कृत डे या संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृतम दिनम के नाम से जानते हैं। श्रवण पूर्णिमा के दिन, जो कि फुल मून डे होता है, उस दिन ऑब्जर्व करते हैं ऑफ द हिंदू मंथ, राइट, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। एंड ये डे मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किनकी? पनिनी, राइट। ये एक रिनोन्ड संस्कृत स्कॉलर एंड ग्रामेरियन थे। इसी का संस्कृत वीक भी याद रखेंगे, 6 से लेके 12 अगस्त तक हम ऑब्जर्व करते हैं संस्कृत वीक को। नेक्स्ट, वर्ल्ड लायन डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10th अगस्त। तो वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है लायंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। पैंथरा लियो यहाँ पे लायन का साइंटिफिक नेम होता है, राइट। एंड इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में, उसको हाईलाइट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। पूछा जा रहा है ये कौन सा एडिशन ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड लायन डे का? तो ये 13th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड लायन डे का। नेक्स्ट है, हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द यूजिंग बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल्स, राइट, ग्रीन फ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए एंड फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम यूज किया जा सके। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड स्टील पेन डे ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील पेन, द नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो 11 अगस्त को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका 3rd एडिशन हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 12th अगस्त टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स नोन एज द जेंटल जायंट्स वर्ल्ड वाइड। थीम पूछी गई है वर्ल्ड एलिफेंट डे की, क्या रहेगी? थीम है ब्रिजिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स, ये थीम रहेगी। 12 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो होस्ट को फॉर 2025 के इंटरनेशनल यूथ डे ग्लोबल इवेंट को, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो होस्ट को आइडेंटिफाई करो, वो है नायरोबी कीनिया। इवन नायरोबी कीनिया हेडक्वार्टर है कहाँ का? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 13th अगस्त टू कमेमोरेट फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट 1954 में। आपसे थीम पूछी जा रही है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की 2025 की, तो थीम क्या रहेगी? थीम है आंसरिंग द कॉल। नेक्स्ट, हर साल इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट द यूनिकनेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग लेफ्ट हैंडर्स who account for approximately 10% of the world's population, राइट। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे? ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे हर साल। कब? ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 13 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ये कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 14 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार 5th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। 14 अगस्त को ही पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी होता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 अगस्त को,
राइट, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो इंजर्ड हो गए और जिनकी डेथ हो गई, राइट, दूसरे लोगों की हेल्प करते टाइम, उनके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने इसका 22वां एडिशन ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं सद्भावना दिवस या हार्मनी डे। ये हम 20 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं पीस, यूनिटी, हार्मनी को प्रमोट करने के लिए। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द डेथ और ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 अगस्त को। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, 21 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम पूछी जा रही है आप इसकी, क्या रहेगी थीम वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे की? एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। ये ऑब्जर्व किया गया टू ऑनर द मेमोरी ऑफ ऑल द पीपल who suffered under the transatlantic slave trade during the colonial era, right? तो हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड अबॉलिशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 अगस्त, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 23 अगस्त को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करते हैं हम 23 अगस्त को, इसरो की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, जो था चंद्रयान 3, राइट। इंडिया 4th कंट्री बन गया जिन्होंने साउथ पोल के पास यहाँ पे लैंड करा अपना रोवर ऑन द मून। ये एक अपने आप में अचीवमेंट है एंड इसको ऑनर करने के लिए डे हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। और एक और चीज़, ये 2nd एडिशन है नेशनल स्पेस डे का जो हमने ऑब्जर्व किया। 2023 में हमने लैंडिंग की थी साउथ पोल पे चंद्रयान 3 ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर वीक, राइट, ये इसकी थीम पूछी जा रही है और कब से कब तक ऑब्जर्व किया जाता है ये भी याद रखेंगे, राइट। तो वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया जाता है 24 से 28 अगस्त तक। ये इसका 35वां एडिशन था वर्ल्ड वाटर वीक का, राइट, मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट हम प्रमोट कर सकें एंड क्यों उनका वेपन, न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। इसका 16वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ध्यानचंद सिंह जी। ये हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं बहुत बड़े एंड इन्हीं को विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से जानते हैं एंड 14th एडिशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया नेशनल स्पोर्ट्स डे का। नेक्स्ट इज आवर होमवर्क सेक्शन स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फूड इंडिया, which edition of this was held recently? Second, our country India will become the third largest economy, world's third largest economy by which date or by which year, right? That is by 2028 and this report was given by which organization? Tell me that. Then third question, tell me recently which state will be setting up India's first Hornbill Conservation Center and in that state also at which tiger reserve it will be established? Tell me that. Then fourth question students, tell me recently in India where is the third highest tiger density in India, right? Where is it? Tell me the first also where we see the highest tiger density. Then fifth question is when do we observe sustainable agriculture day? So these are your homework questions students and I need to see maximum participation from all the students watching this video.